अंकित भाई, मैं बात करना चाहूँगा जब हालात जो काबुल का अभी अफगानिस्तान का है वो बहुत एक मुश्किल दौर से गुजर रही है अभी, क्योंकि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्रीट्स है, कभी कभार ये बहुत फुल हो रहा करता है, यहाँ पे अभी रश होता है, बिल्कुल एम्प्टी है, यू कैन सी द एम्प्टी स्ट्रीट्स हियर. Now we can talk about the journalists. So अभी तक कोई स्टेटमेंट्स इशू नहीं हुआ है जो जर्नलिस्ट की हालात को दुश्वार करने के लिए जो कह रहे होंगे, या फिर उन लोगों को कोई स्टेटमेंट इशू हुआ होगा कि आप लोग काम मत करो या फिर अपने ऑफिस मत जाओ. कुछ घंटे पहले पुलिस टीवी पर गए हुए थे, मैंने देखा फुटेज, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा. बस मेरे ख्याल से वहाँ सिर्फ आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ. या हाँ, आपका कैमरा दोबारा चालू हो गया. कैमरा आपका रुक गया था. बस मैं ये देखना चाह रहा था, ये विजुअल्स जो इस समय आप देख रहे हैं, जो मजबूल्ला साहब हमें दिखा रहे हैं, ये काबुल के इस समय लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं इन टाइम्स ऑन भारत पर. एक्सक्लूसिवली आप इस समय ये विजुअल्स देख रहे हैं. जी, आप बता रहे थे, जारी रखिए मजबूल्ला साहब. हाँ, जो I'm talking about the journalist's life. Taliban has issued any statements that says we have no issue with the journalists, and they can go to their offices and they can do their routine activities in Kabul. Before they went to Tolo News studio, and they have just, I think there was a hi, hello, nothing else. Okay. That's why, yeah. That's Majula, why, can I please request you to, your video is once again frozen. If you can switch on your video, I just wanted to ask from you. Sorry. Yeah, we can see. Because we are facing internet issues here. Internet issues because the situation. That's why we have very low internet packages here in Kabul right now. This is the main street of the Kabul PD5. That's the Taliban. When Taliban entered, so there is another street. Taliban entered the Kabul from that side. Okay. Yeah. So up to now, there is no issue with the journalists. There is no issue with the government civilians, with the government workers, and they have issued any statements that go to routine activities, go to their offices. Up to now, there is nothing. Okay. We had only face with the Kabul airport. The footage I saw, the footage we have shared. So there was lots of rush. Over 3,000 people entered to Kabul airport to get out themselves from the Afghanistan. जी, मजबूल्ला जी, मैं 1 मिनट बताना चाहता हूं दर्शकों को. आपने क्या बताया मजबूल्ला साहब? ये लाइव तस्वीरें आपको काबुल की दिखा रहे हैं और इस वक्त काबुल में ही हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी वहां पर हालात हैं. कोई ऐसा फरमान जारी नहीं हुआ है कि लोग काम नहीं कर सकते, पर एक सेंस ऑफ फियर जरूर है. मैं आपसे जानना मजबूल्ला साहब, मैं समझना चाहता हूं, जैसे आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे कि हजारों लोग वहां पर हैं, तो क्यों ऐसा पैनिक है? कौन है ये लोग जो वहां से एकदम निकलना चाहते हैं? और क्या काबुल में भी ये सेंस है कि दे हैव बीन अबैंडन्ड, अमेरिका ने और बाकी दुनिया ने उनको छोड़ दिया है बिल्कुल? एक्चुअली ये बात तो है. जब सब ये कह रहे हैं कि अब हालात ऐसा है, जब अफगान पीपल दे आर थिंकिंग दैट नाउ वी आर लोनली, वी आर होपलेस, नाउ everything will be destroyed. That last 20 years we have built. Kabul was Afghanistan was underdeveloped country, so we have a bridge, we had the hotels, we have restaurants. The people was free, everyone was free here. The restaurants and all these things. So it was like a freedom for the Kabul people, especially Kabul people, and the major cities like Mazar, Herat. Cities and Kandahar cities. People were going to the picnics. They were very happy. Just they are panic about that our freedom, they are taking our freedom, or just they are leaving us like before. This is the panic. And also they rush the people who work with the U.S. government and also with the foreigners. They were foreigners. They are panic about their life. That's why they rushed to the airport like sudden as the U.S. troops arrived into Kabul airport. But later on, the U.S. troops has taken over all the airport, manage the air control, run airspace control. जी.
मैं बताना चाहता हूं, मैं मुजीबुल्लाह जी अपने दर्शकों को हिंदी में थोड़ा समझा देता हूं कि आपने क्या कहा। इस समय जो आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें आपको काबुल से नजर आ रही हैं और मुजीबुल्लाह साहब, मैं समझ सकता हूं कि इस समय वो स्ट्रीट पर रखे हुए हैं, हम उनका चेहरा वो शायद नहीं दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत इतना आसान नहीं है जो हम यहां बैठ के सोच रहे हैं, वो बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं फिलहाल। मुजीबुल्लाह साहब से आप इस समय देखिए, उनका तारुफ आपका करा देते हैं जो हमें इस समय विजुअल्स वहां से लगातार दिखा रहे हैं। जर्नलिस्ट हैं, बता रहे थे कि किस तरीके से पहले जो इतना लाइवली था काबुल, वहां पर रेस्टोरेंट हैं और मज़ार शरीफ और शहरों में पिकनिक के लिए लोग जाते थे, खुले छूट थी लोगों को। अब वो उस तरह का माहौल, कुछ जरूर डर का माहौल जरूर है वहां पर। मुजीबुल्लाह, आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड from you, because right now we are getting news reports that women are not allowed to work, women journalists are not going to office. Can you confirm for us, with all the television channels which are now under the control of Taliban, are women also allowed to go and continue their work as journalists? Well, honestly, I didn't see any woman since yesterday in the TVs. Like the major TV, the TVs, the famous TVs like Tolo News, Ariana Television. But in the statements that they have issued, they says that girls can go to education since this is a season of the exams of university and schools are going in Kabul and the cities. So they have issued. You can see that they are shifting from one place to another place. Also, people are in rush and shifting from one place to another place. And this is the track just gone. Gee. I was saying that there is no restriction, as I heard, saw the statements from Taliban, that there is no restriction for the women that they should not go to school or not to go to university. But they should go to schools, they should give their exams, and they should go to universities. Okay. But there is not any statements about the offices, government offices, if the women can go to the offices or not. But still, it's like a pending, or maybe they issue another statement later on, as they have. जी मुजीबुल्लाह साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अगर आप थोड़ा सा हिंदी में भी हमारे दर्शकों के लिए बोल पाएं। मैं उन्हें बता रहा हूं, वैसे आप जिस तरह से बता रहे थे कि मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या महिलाएं जो पत्रकार हैं वो इस तरह अपने काम पर जा पा रही हैं, महिलाएं जा पा रही हैं, तो मुजीबुल्लाह साहब ने हमें बताया कि कल से कम टेलीविजन चैनल्स पर और जगह पर महिलाएं नहीं देखी गई हैं। पर तालिबान ने अभी स्टेटमेंट जरूर दिया है कि बच्चे जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो अपने स्कूल्स में जाके अपने एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अंत में मुजीबुल्लाह साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके जिम्मेदार किसको लोग मान रहे हैं अभी, जिस तरीके से घुटने टेक दिए अशरफ गनी, जिस तरीके से भागे हैं अफगानिस्तान से, तो अब जो एकदम बिल्कुल ये बदलाव आया है उसके लिए जिम्मेदार किसको मान रहे हैं लोग वहां पे? Actually, जिम्मेदार, they are blaming the government, the previous government. Of course, President Ashraf Ghani, as they flee southern from the Kabul. And rumor says that there was lots of bags of, as the Russian TV has announced that there was lots of bags of dollars with the President Ashraf Ghani, but that's not clear right now. But the people are just blaming the government that sudden how, in a blink of eye, all the provinces has collapsed. 90% of Afghanistan collapsed into the Taliban, and how and why. This how and why is still like a big question mark for all the people. But how they're thinking about the situation of Afghanistan. Majbullah, a lot of journalists are very, very scared right now. As someone who has been reporting from Kabul for a very long time in very different circumstances that you find yourself in today, is there a sense of fear while you are out on the streets reporting? Well, actually, it's a sense of I'm scared because just I passed the Taliban car and I said hi, hello. That's it, because I'm also not in a well dressed as they want us in 90s. While the first time they took Kabul and invaded Kabul for over 6 years. So people are thinking that these Taliban are not those Taliban that they were in 90s, but now they are changed. As I heard their statements, it's kind of
changes came in their statements. That one was that girls can go to the schools and universities. Okay. Also, they can continue their educations. And also, it's not clear whether they are issuing another statements or just they are stuck on their own statements that they have issued, because their leader is still unknown. Yes. And everyone wants to see the new leader in the presidential palace of Afghanistan. Majbul, if you allow me a moment, let me very quickly tell our viewers what you have just been telling me. बहुत मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जर्नलिस्ट बहुत डरे हुए हैं, कि आपको भी डर है? तो अभी वो जब वो चल रहे हैं, हमें बता रहे थे, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, तो एक तालिबान की गाड़ी खड़ी हुई उनको मिली, जिसको उन्होंने सलाम कहा, और उन्होंने कहा कि मैं पूरे तरीके से, जैसे 1990 के दशक में पूरे तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक जो पुरुष हैं उनको भी सलवार सूट पहन, मतलब जो कमीज पहना, जो पठानी सूट है वो पहनना पड़ता था, दाढ़ी बनानी पड़ती थी, तो वो खुद ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं जो बीच में पिकअप ट्रक जा रहे हैं, ये तालिबान के पिकअप ट्रक हैं और बहुत जोखिम भरी इस समय में रिपोर्टिंग मुजीबुल्लाह कर रहे हैं, तो डर जरूर है। मुजीबुल्लाह जी, मैं if I can just request you to stay on with me, I very quickly just want to go across to Ashok Sajanar. He's a former ambassador, somebody who keeps a very very keen eye, जो बहुत नजदीकी से अशोक सज्जनर साहब नजर रखे हुए हैं इन पूरी घटनाओं पर, इस पूरे इलाके पर भी बहुत पैनी नजर रखते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीसी द्विवेदी साहब भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर निसार अहमद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये भी एक राजनीतिक सामाजिक विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर नीरज कौल हैं, वो भी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं, धीरज कौल। अशोक सज्जनर साहब, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी आपने देखा, हम लोग थोड़ा सा क्योंकि उनके साथ इसलिए रुके क्योंकि लोगों को बताना चाहते थे कि इस समय जिंदगी बदल कैसे गई है, लाइव रिपोर्टिंग जिस तरह से आपने वो देखी, किसकी जिम्मेदारी होती है? कौन खड़ा होकर ये कहेगा कि हां मुझसे गलती हुई और उसकी वजह से ऐसा हुआ? क्या सारा दोष जो बाइडेन पे मर देना चाहिए, अमेरिका जिस तरीके से एक जितनी जल्दी बिल्कुल गायब हो गया, या हम ये कहें कि अफगानिस्तान पूरी तरीके से तैयार नहीं था? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? अशोक सज्जनर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बस अभी आ रही है। सो आई एम सो सॉरी, आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड। सो अगर आप जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था सर, अभी हम थोड़ी देर उसके साथ रुके, मुजीबुल्लाह साहब के साथ, क्योंकि बड़ा जोखिम लेकर वो हमारे पास इस समय लाइव रिपोर्ट लेकर आ रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसको जिम्मेदार माना जाए अफगानिस्तान